व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया था कि मैंने कितना खर्चा किया फॉर डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इन बॉस्टन बिटवीन 2016 to 2018. I was doing my masters in cybersecurity. If you haven't watched that video, then please go back and watch it because this is part 2 of that video. And here in this video, I'm going to tell you guys how much money I made living on campus and doing a lot of different activities. Like I was a teacher's assistant for one semester. I was working on campus. I did 2 different internships, one in Boston, one in New York. ये सारी चीजें करके I made money as a student, and this money that I made helped me reduce my overall cost of masters. अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास भी अवेलेबल हैं, एंड लेट्स गेट इनटू द नंबर्स एंड सी exactly how much money I made while doing these different things. In the end, what I'm going to do is subtract the money that I made as a student from the overall spending that I did, and then the leftover amount would be the amount that I basically took a loan or the money that my father gave me for doing this masters. ये सारी कैलकुलेशन देख के आपको बहुत अच्छा एक आइडिया लग जाएगा कि कितना खर्चा होने वाला है मास्टर्स करने के लिए और कितना पैसा आप एज अ स्टूडेंट कमा सकते हो और कितना पैसा आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा. तो अगर आप मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो देन यू विल बी अ लिटिल बेटर प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस. Before we start talking about the jobs that I did on campus and all those numbers, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe. I make videos about college life in America and in general life in America. If you want to study abroad or settle abroad, then these videos can be really helpful for you, and it'll also give me a good confidence boost to keep making these kinds of videos. So please consider subscribing. If you have any comments, feedback, suggestions, please put them in the comment section. What are the topics you would like to see a video on? Please put them as well, and I will definitely read those comments and reply to you guys or make a video of it. Without wasting any more time, let's get into the numbers and see how much dollar I made as a student. So मैं क्या करने वाला हूँ, for the sake of simplicity, I'm going to go in the order of time. I came to America in September of 2016. So for the first semester, which is September, October, November and December, I did not have any on-campus job. नया नया था अमेरिका में, तो पहले तो यहाँ पे सेटल होना है और सब यहाँ पे कंफर्टेबल होना है. उसके बाद आप कुछ सोचोगे कि हाँ यार जॉब ढूंढते हैं. प्रॉब्लम ये भी थी कि बाय द टाइम आई अराइव्ड ऑन कैंपस, ऑल द ऑन कैंपस जॉब्स आर ऑलरेडी फिल्ड, सो आई कुडंट बेसिकली अप्लाई. कॉलेज का जो इंटरनल पोर्टल है जहाँ पे आपको दिखाई पड़ते हैं कि कौन से ऑन कैंपस जॉब्स हैं, उसका एक्सेस मुझे था ही नहीं. जब तक मैं यहाँ पे आऊंगा नहीं तब तक मुझे वो एक्सेस क्रिएट करके देंगे ही नहीं, तो मैं इंडिया से तो वो नहीं कर सकता था. तो इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में तो जॉब था ही नहीं कुछ भी, एंड आई वाज टोटली ऑन माय ओन विद व्हाटएवर मनी आई हैड. देयर आर सम शॉप्स और कन्वीनियंस स्टोर्स ऑन कैंपस, जैसे वॉलिस्टन है नॉर्थ ईस्टर्न में. कुछ लोगों के वहाँ पे कनेक्शंस थे, तो जैसे कि अगर उनको कोई पहचान में सीनियर वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसने रेफर कर दिया और उसके थ्रू उसको जॉब मिल गया. तो ऐसे लोग कर लेते थे. अगर आपने जुगाड़ लगाया देन यू प्रॉब्ली कैन फाइंड आउट, बट मुझे नहीं मिला था फर्स्ट सेमेस्टर में. उसके बाद मुझे सबसे पहले ऑन कैंपस जॉब लगा, वो था रेजिडेंशियल सिक्योरिटी ऑफिसर का. वो बेसिकली ये था कि आपको अपने बूथ में बैठना है और अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनका आईडी स्कैन करना है, एंड इफ आईडी is like if it is green then let them go, if it is red then ask them where they are going and whatever. Like basically if it's red then they cannot go in, right? So you are working as a security officer. It is a very convenient job कि आपको बस बैठे रहना है और बच्चों के आईडी कार्ड स्वाइप करना है. तो यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जॉब प्रेफर करते हैं बिकॉज यू आर जस्ट लाइक सिटिंग, यू डोंट हैव टू वॉक अराउंड इन द कोल्ड और you don't have to walk outside, you just sitting, you can work on your laptop, they allow you to do that. तो अगर आपका होमवर्क है तो होमवर्क कर सकते हो, या फिर अगर आपको लाइक कुछ पढ़ाई करना है, मूवी देखना है, मूवी देखो, टाइम पास करना टाइम पास करो. बट ज़रा स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है, एंड यू मेक इजी $10 पर आवर. इस जॉब में कैसे थे, शिफ्ट्स थे, 4 आवर्स के शिफ्ट्स होते हैं. सो यू कैन टेक मैक्सिमम 2 शिफ्ट्स बैक टू बैक. यू कुड लाइक वर्क फॉर 8 आवर्स, और यू कैन ऑल्सो डू 8 आवर्स ऑफ नाइट शिफ्ट, जो कभी कभी मैं करता था, बट इट्स लाइक ओवर नाइट, सो यू इट्स बेसिकली नाइट ड्यूटी, राइट. और वो मतलब काफी स्ट्रेसफुल होता था. बीइंग अ स्टूडेंट, when the school is in session, you can only work for 20 hours maximum in a week. So I used to like clock in at least 16 to 18 hours. On an average, मैं 16 घंटे का यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं हर वीक 16 घंटे काम कर लेता था. So this on-campus job I did for 6 months from the month of Jan to June of 2017, and on an average I got $10 per hour and I worked for 400 hours. So that's $4,000 that I made while doing this on-campus job. इस टाइम पे मेरे क्लासेस भी चल रहे थे from Jan to April, और मई जून में क्या हुआ कि समर वेकेशन लग गई, और समर वेकेशन में जो वो 20 आवर्स का जो लिमिट है वो बढ़ जाता है, इट बिकम्स 40 आवर्स. तो इसकी वजह से मेरे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए, एंड आई वाज एबल टू बेसिकली कंप्लीट 400 आवर्स टोटल फॉर द टोटल ऑफ 6 मंथ्स. और इसी टाइम में मैं इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई कर रहा था कि मुझे कोई इंटर्नशिप बॉस्टन में मिल जाए, जिससे समर में जो समर के 4 महीने हैं मैं यहाँ पे कुछ काम कर पाऊँ.
तो यहाँ पे मुझे जॉन हैनकॉक करके कंपनी है जहाँ पे मुझे इंटर्नशिप लग गई। जब आपको इंटर्नशिप मिलती है, यू आर नॉट अ फुल टाइम एम्प्लॉय, यू आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड दे पे यू बाय द आवर। सो दीज गाइज वर पेइंग मी फॉर 37.5 आवर्स पर वीक एंड फॉर पर आवर दे पेड मी $20 and based on my calculation, I worked for them for approximately 900 hours and the total money that I made was approximately $18,000 between July to December of 2017. 2017 खत्म होने के बाद in Jan of 2018 I was back in college as a full time student और जो मेरी रेजिडेंशियल सिक्योरिटी ऑफिसर की जो जॉब थी जो पहले लगी थी वो मैं वापस कंटिन्यू कर सकता था फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 20 आवर्स पर वीक। बट जैसे मैंने आपको बताया कि 20 घंटा शिफ्ट्स पिकअप करना बहुत मुश्किल होता है, तो 16 आवर्स का मैंने एवरेज पकड़ा है। आई वर्क फॉर 256 आवर्स बिटवीन Jan and April and that made me approximately $10 per hour and in total I made $2,560. ऑन कैंपस जॉब और पढ़ाई करते करते मैं समर के लिए वापस इंटर्नशिप्स ढूंढ रहा था एंड दिस टाइम आई गॉट लकी, आई गॉट एन इंटर्नशिप एट मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर विच इज इन न्यूयॉर्क। और मैं एक्साइटेड था कि यार अब न्यूयॉर्क में जाके काम करेंगे और मजा आएगा। MSK हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड एंड वेरी फेमस पर्सनैलिटीज हैव गॉटन देयर ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल, जैसे कि संजय दत्त की मॉम वाज एडमिटेड एट MSK एंड इवन सोनिया गांधी वाज going through her treatment at MSK in New York. So it's a very big and famous hospital and luckily I got to work over there. I was a software developer intern for 4 months again and these guys were paying me a little more. They were paying me $26 per hour and again because I was a contractor they paid me for 37.5 hours per week. So in the span of 4 months when I was working at MSK, I worked approximately for 600 hours being paid $26 per hour and in total I made $15,600. Internship करने के बाद September of 2018 I was back in college as a full-time student or remember this is my final semester, more stressful because I have to find a full-time job. बहुत सारे students यहाँ पे lucky होते हैं that their internship gives them a full-time offer and that is the best way, right? You'll be stress free. But मेरे पास stress था क्योंकि मुझे last semester में full-time job निकालना था. Otherwise after graduating I only have 60 days left to find a job, otherwise I have to leave the country. But यहाँ पे एक अच्छी चीज हुई कि मुझे टीचर्स असिस्टेंट की पोजीशन मिल गई, तो जो मैं रेजिडेंशियल सिक्योरिटी ऑफिसर का जॉब करता था वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। द टीचर्स असिस्टेंट पोजीशन विल पे मी मोर। आई वाज बीइंग पेड $20 पर आवर एंड आई कुड एक्चुअली वर्क फॉर 20 आवर्स इन अ वीक। ऑनेस्टली ज्यादा काम नहीं होता था, 20 आवर्स आई कुड राइट, बट मुझे 10-12 घंटे ही काम करने पड़ते थे एंड आई कुड जस्ट लाइक राइट 20 आवर्स एंड दे पेड मी फॉर 20 आवर्स। जिस कोर्स का मैं टीचर असिस्टेंट था वो अप्लाइड क्रिप्टोग्राफी था। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड आई वर्कड फॉर 4 months on this job, total of 320 hours and this made me approximately $6,400. So this was my complete journey as a student at Northeastern from September of 2016 to December of 2018 and after graduating from this I got a job in Jersey City which is closer to New York and I had to move from Boston to New Jersey in the Jan of 2019. The total income that I made as a student is approximately $46,560 which is a huge amount and this is going to be subtracted from the total spending that I did between the same period from 2016 to 2018 which I told you guys in the previous video, so go and watch it if you are not clear on what I'm saying. The final number in my previous video on my total spending was $92,640 and as we discussed in this video the total amount of money that I made as a student is $46,560. If I do the math here and subtract the amount of money that I made as a student from the total spending that I did, it's coming out to approximately $46,080 which is still a huge amount and this is the money that I had to borrow from my parents or from the bank where I took the loan from. But you can see कि almost half हो गया है और बहुत सारे students ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत मेहनत की and they got really good internships. जैसे I was being paid only $20 in my first internship and second internship I was being paid $26. But there were students who got really nice internships. They were being paid $36. Some were even being paid $50, $60 like if they got an internship at Facebook and Google. तो वहां पे अगर आपको अच्छी जगह पे काम मिल गया तो आपके इनकम और बढ़ जाएगी और आपके एक्सपेंसेस काफी कम हो जाएंगे। तो आपका एम वही होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार पढ़ाई पे फोकस करो, ऑफ कैंपस जॉब और ऑफ कैंपस में पैसे कमाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक से पढ़ाई करोगे और अच्छी जगह पे जॉब लोगे तो आपको ऑन कैंपस ही इतना पैसा मिलेगा कि यू कैन support your masters really easy and you don't have to bother a lot of money from your parents or from banks. I hope this video was very useful for you and I hope you got clarity into my expenses as a student when I was studying from Northeastern. If you have any questions, if you have any concerns, if you have any doubts,
put them in the comment section. I will try to answer them. And if you want videos on some other topics, please put them in the comment section as well, and then I will try to make some videos on that topic and give you guys my feedback. And if you're still watching, please subscribe as well. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.